Hello everyone, welcome to Voice of. My name is Sipsankar Hajra. So today, in this lecture, we will go through the economic syllabus of the UPSC main syllabus जो ଆମେ ଦେଖିବା ନା UPSC ରେ जो main syllabus ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ syllabus ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କି decoded syllabus କୁ decode କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି I was I took this class in the classroom classes, but unfortunately I could not record this one. Though I started the recording, that was because of some digital glitch, and I would say the what technological glitch that was not recorded, and hence I thought it would be better to have that recorded one for you, and it's necessary for your preparation. That is why this decoded syllabus, jahaku ame koche economics or decoded syllabus. बहुत ही इंपोर्टेंट रहा डिकोडेड सिलेबस बहुत जरूरी आपण मान जानिबा ना देखंतु आगे सिलेबस रे ना प्रथम कथा कि बहुत सारा लोक पचारती सर इकोनॉमिक्स केमती क्वेश्चन आसीबो को टाइप रो क्वेश्चन आसे ना फर्स्ट क्वेश्चन हला मु कोइ कि गोटे स्मार्ट स्टूडेंट ना गोटे डेडिकेटेड वेल डेडिकेटेड एंड द डेकोरेटेड स्टूडेंट ही और सी शुड नो द सिलेबस फास्ट. Knowing the syllabus is of most requirement, and that should be the first. And you have to know your syllabus. And these words of the syllabus, like these words of the syllabus, should be in the tip of the tongue. It should be in the tip of your tongue. So ये आपको तो माइंड फास्ट फीड कर लो कि भाई जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है ना उसको हमें हर हालत में याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का जरूरत बहुत ही ज़्यादा है. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो इन दिस but in small I would say what video I will talk about the economic development. Now first sentence here you can see the economic development. When I say economic development, and this syllabus I am going through your OPSC syllabus. OPSC, that is the Odisha Public Service syllabus को हमें देखो चाहिए economic part we are going through or I am going through right now here with you. Now in this past देखिए economic and development. See these two are first of here written like the economic and development. When I say economic and development means any development related to the economy. Then which economy? It would be Indian economy. This is very important. Now main syllabus में ये लिखा गया कि economic development related to the Indian economic, and if you say कि sir whether the international news would not be covered, that would be covered because that would be in the current affair part. You may say IR part, though IR is not a part of now as it is not part of the OPSC syllabus, but you could arrange them or link them with the what current affair and the international relation as well. Now the economic Indian economy means what? Indian economy means here we will talk about the broad economy, that is the macro economy. Here we will talk about the macro economy, Indian economy at large. Indian economy at large or the macroeconomic situation they will ask you. They would not ask you the microeconomic situation of the country. So first of all, you have to go through the macroeconomic situation. Then if I say what exactly the macroeconomic situation? The macroeconomic situation lends overall the tax regime of India, the inflation, the employment, all these things, all this stuff is the part of your macroeconomic situation. Banking, all this stuff is required to go through that part. Okay, now issues, when I say issues related to planning, mobilization of the resources, growth, development, unemployment. So these words you have to go through one by one. For example, इंडियन इकोनॉमी. हियर इंडियन इकोनॉमी का मतलब यह है कि इंडियन इकोनॉमी जो भी चेंजेस हो रहा है, जैसे कि हमारा बजट होगा, ये आपका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट. आपका इन्फ्लेशन हो गया, इंडिया में इन्फ्लेशन, इंडिया का इन्फ्लेशन. दुनिया में इन्फ्लेशन हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इंडिया का इन्फ्लेशन पढ़ना चाहिए. क्यों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों आ रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं, ये सारे के सारे हमें इंडियन इन्फ्लेशन से चाहिए ना. इशूज क्या है, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट क्या करे उसके लिए, क्या दिक्कत क्यों आ रहा है. देन आफ्टर पोस्ट कोविड व्हाई द इन्फ्लेशन इज नाउ हैपनिंग इन इंडियन इकोनॉमी एंड व्हाई आरबीआई इज हैविंग व्हाट टाइट पॉलिसी, व्हाई आरबीआई इज having a tight economy policy. Okay, so that is why this all would be together. Now planning means planning and mobilization of the resources. See, resources, for example, coal.
resources for example electricity, resources for example water, resources for example land. Now here resources means mobilization. रिसोर्स, जैसे कि आपने किसी को खाना दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पीएम कल्याण, दैट इज अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दैट इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ द स्कीम दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्स अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. So mobilization of the resource is very much important. That could be, the resource could be in form of coal, the resource could be in form of iron ore, the resource could be in form of your minor sand or the sand minerals, it could be food, etc., and the so on, so etc., so on, so forth. This could be okay resources. And what are the issues coming? Let's say here it is issues, that means the issues coming while mobilizing the resource, while doing the planning. So इसमें जो resources, जो issues आता है ना, उसको हमें पढ़ना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लेट से हमने कोई पीडीएस सिस्टम करके रखे हैं, ठीक है, लाइक द पीडीएस सिस्टम which is being run wide for the long period of time. Now, what are the challenges coming out from that? What are the challenges means how much leakages is there? What are the steps it's been taken by the government to what I would say to strike that leakages? Like all these stops we need to have this. Like resource distribution में जो भी planning आता है, like I would say the leakages. For example, the leakages, there would be leakages in terms of the PDS system. Then for example the PDAs, then it would be what DVT, that is the what direct benefit transfer. Then it comes what, then it would be आधार को लिंक किया जा रहा है of DVT में. So like this kind of the, that means these are the what development. Now development in case of the PDF. ना जब हम बोलते हैं ना डेवलपमेंट का मतलब है कोई चीज हमने करके रखे थे पहले से, उसमें कोई न्यू चीज ऐड हो गया, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट. फॉर से पीडीएस सिस्टम, ये सिस्टम कब से चलते आ रहा है, इसको जब हम बोलते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट का मतलब है एक पीडीएस में आधार को हम लिंक कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट. पीडीएस में क्या हो रहा है, लीकेजेस हो रहा है, उसको हम बंद करने के लिए कुछ उपाय ढूंढ रहे, वो हो गया डेवलपमेंट आपका. ये इसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट. तो ये जो वर्ड ना डेवलपमेंट, ये फ्रीक्वेंटली आएगा, पूरे सारे वर्ड में अप्लाइड है, पूरे के पूरे सिलेबस में डेवलपमेंट वर्ड इज अप्लाइड. वैसे हम जब और थोड़ा नीचे जाएंगे सिलेबस में आपका देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ. ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आएगा. कैसे ग्रोथ क्या होता है, एक पता तो होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या है, मतलब तफात क्या है इनके पीछे, कि व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंशिएशन, व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पर्टिकुलर वर्ड, व्हाट एग्जैक्ट दिस इज लाइक ये द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स को यूज करती. एंड सबको ये भी पता है कि ग्रोथ मीन्स इज अ क्वांटिटेटिव ग्रोथ. क्वांटिटेटिव ग्रोथ को बोलते हैं क्वांटिटेटिव में मेजर करते हैं, इसको हम क्वालिटेटिव पे मेजर करते हैं. जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, जैसे कि इंडिया को बोलते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ. देन वाई जॉबलेस ग्रोथ, तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल आएगा कि क्यों बहुत सारे लोग, वाई द मैक्सिमम पीपल्स दे आर माइग्रेटिंग, एंड हियर इट विद द माइग्रेशन टॉपिक वुड बी आर्ट, दे कैन आस्क यू कि एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो क्या है, why number of people is unemployed more in India, why Indian economic is rightly called as the jobless growth. All these are the questions they will ask you from here. Now in case of growth, if I say in case of growth, what exactly the growth, what are the factors needed for the growth, why India is not growing at faster rate as compared to China, these would be the question. Now development, here it would be SDI, human development index, that could be development कैसे होता है, क्यों नहीं हो पा रहा है इंडिया में, क्यों धीरे हो रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पे आ जाएगा. देन आता है इंक्लूसिव ग्रोथ. ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसे कि आपको पता है कि 11th फाइनेंस ईयर और दैट इज 5th ईयर प्लान, अगर 12th 5th ईयर प्लान, दे वर टॉकिंग अबाउट द इंक्लूसिव ग्रोथ. ना इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है. ना क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ. ना एक चीज यहाँ पे मैं बताऊँ आपको सबको, जो इकोनॉमिक्स का जो मेंस क्वेश्चन आता है वो कंप्लीटली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आता है. तो ये चीज पहले अच्छे से दिमाग में मतलब रख लो. प्लीज कीप इन योर माइंड एंड पुट इन टू द माइंड इज दैट all the economic development question, they would be current affair based question. In the mains exam,
all the question they would be means based question. For say the inclusive growth, what exactly the meaning of that inclusive growth? What is the meaning? The first question is what is the meaning of inclusive growth? The second question is that why inclusive growth is not happening in India? Why not happening? Why not happening in India? Why inclusive growth is not happening in India? What the challenges are coming? The challenges are coming. That is also one. Issues what? What are the issues? Why certain sections is leaving behind? Why the tribals, they are the poorest section of the society? Why certain northeast is underdeveloped, the east is underdeveloped, whereas here south and the western part of India is developed? So these kind of questions would be again asked here. Now comes to the budgeting part. So these questions overall they are going to ask you the current affair based questions. And for that what you have to do is that you have to go through the any paper. I'm not saying that Hindu is the best. You can go through the Hindu. You can go through the Express, Indian Express. You can go through the Mint. You can't. You can go through the what as a Yojana, Kurukshetra. These are the sources is available out there. These are the sources. जो मतलब आपको एक right information देता है ना. So these are the some sources you can have. Now the land reform. Next question is comes that is the budgeting. Now what would be the question from here? Question is that any case of development, let the base year, for example, base year change हो गया. Let's say base year from 11, 12 to government ने सोचा कि it would be better to have the 17 and 18, 2017, 2018 would be the base year. So if this happens, so what would be? That means we are talking about the budget. So that means budgeting में अगर हमने कुछ भी चेंज हुआ, जैसे कि अब फरवरी में बजट आता है आपका, उससे पहले हम देखते थे कि मार्च में आता था, अप्रैल में आता था. तो ये जो चेंजेस हुआ ना, दिस इज द डेवलपमेंट इन बजट, बिकॉज हियर इज द वर्ड अगेन कम्स हियर. ये बजटिंग में हो गया. तो बजटिंग में क्यों जल्दी बजट हो रहा है, उस समय क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्या हुआ, क्यों हम फेब में करने लग गए, फरवरी में क्या दिक्कत हुआ, ये सारे इशूज, इसको हम बोलते हैं इशूज. वैसे बजट का मतलब क्या है, इस साल बजट में क्या हुआ है, जीरो बजटिंग क्या है, नेचुरल बजटिंग क्या है, ग्रीन बजट क्या है. वैसे बहुत सारे आपका जो करंट अफेयर क्वेश्चंस वो यहाँ पे इजीली आ जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा आपका. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस दिस वर्ड and anything revolving or related any kind of current affair that you could relate to this budgeting part, you have to go through. For example, we are measuring GDP, then they might ask you what is GVA, why we are calculating GDP in GVA rather than the GDP, which would be the based or the ideal, why certain countries they are doing the GNP. So these calls of the basic question they might ask you. उड़ीसा में बजट में क्या हो रहा है, क्यों आप बजट डेफिसिट क्यों होता है, क्यों दुनिया में सारे के सारे कंट्री बजट डेफिसिट बजट प्रेजेंट करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पे पूछेंगे वो. ठीक है. और ये जो हो गया जैसे आर्टिकल 1112 हो गया, मतलब 112 हो गया, ये सो सारे जो वर्ड होता है ना, ये प्रीलिम के लिए हो गया. फैक्चुअल जो होता है. वैसे लैंड रिफॉर्म आ गया आपका. देखो लैंड रिफॉर्म एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी एंड आई वुड से तो ओपीएससी एज वेल. क्यों? क्योंकि लैंड रिफॉर्म इसलिए आया है रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए, पोवर्टी को हटाने के लिए. तो यहाँ पे आपका जो लैंड रिफॉर्म वाला क्वेश्चन है, ये आपको लैंड सीलिंग पूछ सकते हैं, लैंड सीलिंग एक्ट. दे कैन आस्क यू द मार्जिनल फार्मर, they can ask you the marginal farmers, how the Indian marginal farmers they are suffering from, okay, exactly what kind of problems they are being faced, okay, why they are suffering from like this. So ऐसे बहुत सारे एक सवाल आ जाएगा.
you will have number of questions will come from this land reform. Okay, तो लैंड रिफॉर्म में जितना सारे एक्ट है उसको पढ़ लो, लैंड रिफॉर्म क्यों हुआ था, क्या अब जरूरत है इंडिया में, क्यों लैंड को, जैसे कि ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ था, अब तो ये लीगल राइट है, जैसे कि आर्टिकल 300A सबको पता है कि व्हाई दिस काइंड ऑफ चेंजेस लैंड। यहाँ पे आपका जो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, लार्ज फार्मर, दिस वुड बी हाउ लैंड इज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ द रूरल पॉवर्टी, ये भी आप लिख सकते हैं। Then comes to the effect of liberalization on economic changes and industrial policies. Here see one thing. Now liberalization in 1991, when liberalization came, so here is the development and here is the economy. Liberalization effect on economy, meaning what? When I say लिबरलाइजेशन इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, उसका मतलब ये होता है कि जब हम बोलते हैं ना कि इफेक्ट ऑफ लिबरेशन ऑन व्हाट, इकोनॉमी, मतलब ये इकोनॉमी आपका सर्विस सेक्टर में क्या इम्पैक्ट आया है, आपका एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट आया है, आपका मैन्युफैक्चरिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आपका ओवरऑल ओवरऑल इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो these things are very necessary. So overall, I would say, so these are the impact. Overall, I am talking about overall impact of economy. Impact of economy. कि what are the impacts of economy is going to have. Okay. तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइस सर्विस सेक्टर क्यों हो गया, टैक्स में क्या दिक्कत आया है, रुपए में क्या है, जैसे कि आपका रुपये आप हम क्या करें, फ्लोटिंग करेंसी है, हमारा फ्लोटिंग करेंसी है, वी आर नॉट हैविंग लाइक द व्हाट पेक करेंसी, वी आर नॉट हैविंग पेक करेंसी, लाइक ऑल दिस व्हाट हैज चेंज्ड और हैपेंस टू ऑफ योर फॉरेक्स, फॉरेक्स को क्या हुआ है। तो वैसे बहुत सारे challenges and all these stuffs will comes from here. Okay, now new industrial policies, let's say they will ask you what exactly the new industrial policy, the new industrial policy of India, the industrial policy of Odisha, they will ask you all these stuffs from here. Okay, now comes to the energy. Okay, now infrastructure and energy. See, infrastructure in energy, for example, green energy. What exactly the green energy, what do you mean by the green energy? Okay, what do you mean by the green energy, what is the green energy mission, they will ask you okay, green energy mission, they will ask you the hydrogen, green hydrogen, all the, they will ask you the biofuel, what exactly the biofuel they ask you. Now let's say the port, for say port, they will ask you what are the significance of the port, what are the challenges of the ports, what are the models to grow the ports, for example PPP, that is the private, I would say what, uh, private and the public partnerships, that would be the PPP model. Road, like UPSC this year has asked, that is a quadrilateral, quadrilateral. Airports, why the airports is been privatized. Okay, railway, what are the challenges why railway is not profitable. So like these, they will ask all the development and issues related, exactly the issues related, all these things. And see, all issues are not required. Only those issues are on the light, they will ask you. Now comes to the industrialization in Odisha. Now comes, these are the what issues and prospect. Here again, you have to circle the keyword. What they are asking ki industrialization in Odisha, it's issues and challenges. They are asking this. If they are asking this, then you have to confine yourself into that particular point as well. First, say industrialization issues. So why? That means I will say Odisha is the second richest state in terms of the minerals deposit, and I would say the reserve, and endowed with pretty handsome amount of the minerals. But despite the fact this particular state is one of the least industrialized state in the country, then why? What are the challenges is coming here? Why these things is happening to Odisha? What are the issues revolving or related to the industrialization? Why Odisha is not happening industry? Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal, Maharashtra, all this state, they're having so much of industrialization, they're going so ahead, and the FDI is coming pretty less to this state. Why? Prospect क्या है, इसमें आगे चल के क्या होगा,
अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उड़ीसा में, क्या होगा? क्या मेक इन उड़ीसा सक्सेस होगा? क्या द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच उड़ीसा हैज बीन announced, but that is going to watch all this. So like this, everything that will comes to the current related topics would be definitely comes to your paper. Now, in other words, I would say simply, if you want to have or to score the better in economics, let it be UPSC, let it be UPSC. Simple, you have to have very much confidence with this stuff. The words of the syllabus should be in the tip of the tongue, and you must be aware with the current affair, the current related development of the economic into your syllabus and leak into the syllabus. Okay, thank you all everyone. Don't forget to share, comment, and I would say like. Wish you all the best. Thank you everyone.